नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक है बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। टॉपिक नेम बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी। लेट x and y be two discrete random variables defined on the same sample space x, same sample space s. X taking the values small x1, x2, x3, so on, x, and discrete random variable y taking the values small y2, y3, and so on, yn. Then the probability that x takes on the values xi and at the same time y takes on the value yj, denoted by f of xi yj, f of xi yj, या फिर इसका नाम रख दिया जाएगा pij, is defined to be the joint probability function। ये हमारे पास joint probability function होगा या फिर simply joint distribution of x and y, joint probability function. Thus, joint probability function also called bivariate probability function. This is also called bivariate probability function. F of x, y is a function whose value at the point xi, yj is given by bivariate probability function की वैल्यू कैसे आएगी? Bivariate probability function की वैल्यू f of xi, yj equal probability x equal xi and y equal y, and I varies from 1 to 3 so on to m, j varies 1 to 3 so on up to n. The joint are bivariate probability distribution consisting of all pairs of values xi, yj and their associated probabilities f of xi, yj. The set of the triplet xi, yj and f of xi, y. ये पेयर ऑफ वैल्यूज और इन इस पेयर के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट बन जाएगा टू वे टेबल स्वैप होता है। ये देखें टू वे वेरिएबल में ये कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। रैंडम वेरिएबल एक्स को जो वैल्यूज मिलेंगी वो इस तरह से मिलेंगी, रैंडम वेरिएबल वाई को जो वैल्यूज मिलेंगी वो इस तरह से मिलेंगी। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वैल्यूज पर ये x1 y2 पर ये x1 y2 पर ये x1 y, likewise x2 y1 पर ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, x2 y2 पर ये और x2 yj पर ये। सो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाए। Expressed by means of formula of f of xy, the probabilities f of xy can be obtained by substitution. Substitute the appropriate values of x and y in the table. A joint probability function has the following properties. Joint probability function की ये properties है f of x y xi yj greater than 0, यानी ये joint probability function की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल xi y, और ये समेशन है, समेशन जे f of xi yj समेशन करने के बाद एंड पर वैल्यू 1। ये हम टेबल में भी देख रहे हैं कि इनकी एंड वैल्यूज का जो सम है वो 1, और यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब अगला हमारा जो हेडिंग है वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
देखते हैं जी ये क्या है। फ्रॉम द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स वाई we can obtain the individual probability function of x and y. Such individual probability functions are called marginal probability function. Let f of xy be the joint probability function of two discrete random variables x and y. Then the marginal probability function of x is defined as g of xi summation j when f of xi y. और इसको अगर समेशन को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा xi must occur either with y1 or y2 so on y. And for probability of x equal xi. The individual probability function of x is found by adding over the rows of two variable. Individual probability function of x अगर फाइंड करना है तो टू टेबल की रोज को ऐड करना पड़ेगा. Similarly, marginal probability function for y is obtained by adding the column. कॉलम्स को ऐड करेंगे तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन y का मिलेगा. रॉस को ऐड करेंगे तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फिर हमें x का. देन h of yj equals summation I1 f of xy equal probability of y equal y. The values of marginal probabilities are often written in the margins of the joint table as they are row and column totals in the table. The probabilities in each marginal probability function add to 1. ये इसकी बात कर रहा है कि इस तरफ से अगर कॉलम्स को ऐड कर लें तो आंसर 1 आएगा. और रो को अगर ऐड कर लें तो फिर भी आंसर हमारे पास 1 आएगा. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है? Let x and y be two discrete random variable with joint distribution function f of x y. Then conditional probability function for x and y denoted as f x over y is defined by f of xi by j equal probability of x equal xi over y equal y. Probability of x equal xi and y equal yj divided by probability of y equal y. F of xi yj over h of yj, where hy is the marginal probability and hy should be positive. It gives the probability that x takes on the values xi given that y has taken on the values yj. The conditional probability f of xi over yj is non-negative and for a given fixed yj adds to 1 and I. Hence the probability function. Similarly, conditional function for y given x equal x is f of yi xj equal probability yj over x. Probability of y equal yj and x equal xi over probability of x equal y. It will gives f of xi yj over g of xi where gx is positive. तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को भी देखा. इसके दोनों फार्मूले चेक किए हैं. दोनों फार्मूले अप्लाई किए. एच वाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो भी अप्लाई किया है. जी ऑफ एक्स आई ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ये भी अप्लाई किया जो कि इन कॉलम की शक्ल में हमारे पास मौजूद थे. आज हमने बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन पर पढ़ा और इसकी डिटेल भी देखी टेबल